Good morning, student. Myself, Poonam Thawait. I am Assistant Professor of Chemistry in KG Arts and Science College. Today, we will learn environmental chemistry through these topics: vertical stability of atmosphere, biogeochemical cycles, and biodistribution of elements. Now, let's start the topic vertical stability of atmosphere. Atmosphere Atmospheric vertical stability is a measure of atmosphere's tendency to discourage vertical motion. Now, what is vertical motion? It is different type of weather system and their severity. In stable air, vertical motion is inhibited. तो वर्टिकल मोशन का न होना ही वर्टिकल स्टेबिलिटी है. Okay, to understand vertical stability in a simple way, we imagine a parcel of air. What is a parcel of air? It is a flexible, a flexible. It is like a flexible air balloon and having a cover that allow it to expand but prevent the air inside from the mixing of surrounding air. So we can see that it is seems like to a party balloon, and we can say that the parcel of air is a specific group of air molecules that does not mix with surrounding airs. The air parcel near the earth surface get warmer. दिन के समय जब सरफेस अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उसके नज़दीक वाले एयर पार्सल का टेम्परेचर भी अधिक हो जाता है, और जैसे ही यह टेम्परेचर बढ़ता है वो एयर पार्सल टेंड्स टू राइज इन द एटमॉस्फेयर since the air pressure decreases with altitude. We know that air pressure is decline with altitude. The parcel will expand and relax, and its temperature will therefore decrease and it become cooler. If the parcel were cooler, then the surrounding air would be heavier and it would sink back to the ground. So now, how can we measure stability or vertical stability or atmospheric vertical stability? To measure the atmospheric vertical stability, one term is used, that is lapse rate. Change in temperature with altitude. When temperature decreases with altitude, it is called lapse rate. So the lapse rate is measuring the temperature of air at various height is called environmental lapse rate. तो यहाँ पर जो टर्म यूज हो रहा है लैप्स मीन्स डिक्लाइन इन टेम्परेचर. तो ये लैप्स रेट का वर्टिकल स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है वो देखते हैं. व्हेन द लैप्स रेट इज लार्ज देन द एटमॉस्फेयर इज अनस्टेबल, but if the lapse rate is small, means relatively small change in temperature, it is a good indication of stable atmosphere. Lapse rate का मान अधिक है तो एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, यदि लैप्स रेट का मान कम है तो एटमॉस्फेयर स्टेबल है. और द मोस्ट स्टेबल कंडीशन अकर्स ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्शन. टेम्परेचर इन्वर्शन की कंडीशन में मोस्ट स्टेबल कंडीशन देखने को मिलती है. व्हाट इज टेम्परेचर इन्वर्शन? इन विच increase of temperature with height rather than decrease, it is called temperature inversion. Okay, now we see what is the role of vertical stability in environmental. Effect of atmospheric instability in moist atmosphere includes thunderstorm development, which over warm ocean can lead to development of a tropical cyclone, and in dry atmosphere मिराज एंड डस्ट कैन फॉर्म. तो हम देख रहे हैं कि वर्टिकल इंस्टेबिलिटी के कारण ही ओशियंस के ऊपर साइक्लोन्स डेवलप होते हैं, जबकि ड्राई एरिया में डिजर्ट्स में मिराज डेवलप होता है. तो ये वर्टिकल इंस्टेबिलिटी वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन को चेंज करने में भी रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर कैन एसोसिएट विथ फॉग एंड इंक्रीज्ड एयर पोल्यूशन. यदि एटमॉस्फेयर स्टेबल है तो वहाँ फॉग डेवलप हो सकता है और एयर पोल्यूशन का मान बढ़ सकता है. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्टिकल स्टेबिलिटी and how can it is measured and what is the role of it in the environment. Now let's start the next topic, which is biogeochemical cycle. The cycle in the environment are defined as the cyclic pathway in which
transition of elements occur from environment to organism and from organism to environment regularly and continuously. Such cycles are also referred as biogeochemical cycles. Here, the word bio denotes living organism, geo represents soil environment, while chemical means elements such as carbon, sulfur, phosphorus, oxygen, nitrogen, which undergoes transition continuously. So, cycle may be defined into two ways: sedimentary or gaseous cycle. In the sedimentary cycles, the reservoir pool is deep sediment, and sulfur cycle and phosphorus cycle are the example of sedimentary cycle. The next type, gaseous cycle. Air is the reservoir pool in this type. Oxygen cycle, carbon cycle, nitrogen cycle are the example of gaseous cycle. Now let's start carbon cycle. It is a gaseous cycle. We know that amount of carbon is 0.03% in the atmosphere. Carbon is an essential constituent of carbohydrate, proteins, fats, and large amount of organic compound. Carbon is taken in the form of carbon dioxide by green plants, and it is incorporated into the molecule of carbohydrate by green plants and other chloroplast containing organism, and this phenomena is known as photosynthesis. Animal feeds upon plants and plant product. During the respiratory pathway, the carbohydrates are broken down and giving energy, carbon dioxide, water, and the carbon dioxide is liberated into the air or water during the respiration. So both release the carbon dioxide during respiration, animal and plants. Weathering of rocks, as well as combustion of fuel, also liberated carbon dioxide to reservoir pool. Carbon dioxide is also released by decomposition of organic matter. Volcano action are also responsible for the addition of carbon dioxide to the atmosphere. Carbon moves from atmosphere through green plants, then animals, finally from uh, after both death and decay, the bacteria, fungi and microorganism returns that into the atmosphere through decomposition of dead organic matter. Thus, the carbon cycle of the nature, during which carbon in the form of carbon dioxide utilized again and again by living organism. All the carbon of plants, herbivorous, carnivorous, and decomposites are not respired, but some of it is fermented and some is stored. As the storage of carbon in the sediment, just as decomposition works to store minerals, erosion may uncover them. Weathering of rock can oxidize the carbon in the nature. Some carbon is permanently stored in the sediments because it is escape from weathering. So here we can say that this is the cyclic pathway in which carbon transmit to one to another living or non-living elements. कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल करके कार्बोनिक एसिड बना लेता है, जो कि प्रेसिपिटेशन के द्वारा वापस पृथ्वी पर आकर के धरती पर आकर के सॉइल में मिलता है। वहाँ कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ और कार्बन और इनऑर्गेनिक इन सेडिमेंट्स के रूप में पृथ्वी पर जमा हो जाता है। इस प्रकार से ये कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल चलता रहता है। द नेक्स्ट साइकिल इज नाइट्रोजन साइकिल. Nitrogen cycle is a gaseous type of cycle. So, in this cycle, air is the reservoir pool. We know that nitrogen is an essential constituent of animals and plants. Nitrogen is a constituent of various organic compounds.
which are found in plants as well as animals, such as protein, nucleic acid, vitamins, enzymes, amino acid, alkaloids, etc. Nitrogen is also found in chlorophyll, which is essential for photosynthesis. Nitrogen is also main constituent of atmosphere, but neither animal nor plant are capable of absorbing it. Now the question arises how the nitrogen of the atmosphere assimilated to the plant and animal and converted into useful product, and how the concentration of nitrogen remain unchanged. Nitrogen cycle is a cycle in which nitrogen is converted into its compound such as nitrates, nitrites, ammonia, and passing back to the atmosphere as nitrogen. In the soil, nitrogen is present in two forms, which are organic form and inorganic form. Now, what is organic form? After death and decay of animal and plants, it is found as a residue of their parts. What is inorganic form? Inorganic form are nitrates, nitrites, and ammonia. We know that excess of amino acids are converted into ammonium and its compound like urea, uric acid, and then excreted by the animal. The all ammonium compound present in soil are decomposed by the bacteria and fungus, and here either these compounds are either absorbed by the plants or converted in nitrate by some bacteria. This type of bacteria called nitrosophile bacteria, which are present in the soil and oxidize ammonia to nitrite. Nitrites further oxidized by another kind of bacteria called nitrifying bacteria, and these are convert nitrite to nitrate, and as the nitrate forms it can be used by plant, absorbed by the plants. In plant cell, nitrite is reduced and converted into ammonia, and the nitrite are used by green plant and synthesize protein. Plants are eaten by animals and then nitrogen containing protein are entered to animal body. एनिमल बॉडी में आने के बाद एनिमल और प्लांट सेल इनके डेथ और डिकम्पोजिशन और बैक्टीरिया के द्वारा उनके केमिकल चेंजेस के बाद अमोनिया और अमोनियम सॉइल फिर से सॉइल में मिल जाते हैं, जहाँ से ये साइकिल पुनः शुरू होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नाइट्राइट है, नाइट्रेट्स है, वो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्रोजन में वापस से कन्वर्ट हो जाता है और लाइटनिंग के द्वारा ये जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा होने के बाद प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन दो टाइप से हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? हाउ द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल फॉर्म विच इज एसेंशियल फॉर प्लांट and it is done by nitrogen fixation. There are two ways to fix the atmospheric nitrogen. First is non-biological or second is biological. In non-biological way, the nitrogen is fixed by lightning and other electrical changes reaction. Biological nitrogen fixation. There are some plants which have a special type of nitrogen fixing bacteria called symbiotic bacteria in the nodules of their roots. This bacteria
possess the power of converting atmospheric nitrogen in the form which can be used by plants. Some other bacteria, fungi, blue-green algae are also capable of nitrogen fixation. So, through the nitrogen cycle, this is goes on continuously in nature, in which nitrogen of nitrates, and it is used again and again by plants and animals. The next cycle is sulfur cycle. Sulfur is an essential constituent of protein and amino acid. It is an example of sedimentary cycle. Sulfur is tied up in organic and inorganic form, and it is released from the deposits by weathering and decompositions. The combustion of fuels, fossil fuels, volcano eruption, and the surface of oceans, and it released by decomposition of various sources are the main source of sulfur in atmosphere. Volcanic activity release hydrogen sulfide, which is converted into sulfur dioxide, and sulfur dioxide is insoluble in water and carried back into the soil in the form of sulfuric acid. Now, now we can see that sulfur is in the atmosphere found in the form of sulfur dioxide. So what are the source of sulfur dioxide? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका सोर्स जो है वो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण मेनली सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिलती जाती है। इसके अलावा ऑटोट्रॉप्स के द्वारा जब वहाँ पर फॉरेस्ट में, ग्रीनलैंड में आग लग जाती है, तब भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में मिलती जाती है। ये वापस से ऑटोट्रॉप्स के द्वारा यूज़ भी की जाती है। ऑटोट्रॉप्स मतलब ग्रीन प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन के द्वारा सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है और यह आगे ऑक्सीडेशन के द्वारा सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस सल्फेट वाले फॉर्म का यूज़ ऑटोट्रॉप्स यानी ग्रीन प्लांट्स करते हैं। ग्रीन प्लांट्स के बॉडी में आने के बाद ये एनिमल बॉडी में आ जाता है। जैसे ही वो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट को फूड के रूप में यूज़ करते हैं और एनिमल की बॉडी में आने के बाद वो फूड चेन में एंटर कर जाता है। ऑटोट्रॉप्स और एनिमल्स दोनों के ही डेथ, डीके और पेस्ट के द्वारा ये फूड चेन में प्रवेश कर जाता है। एनिमल और प्लांट सेल में जो सल्फर है वो सल्फाइड सल्फर के रूप में पाया जाता है। ये बैक्टीरियल रिडक्शन के द्वारा सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है और आगे ये ऑक्सीडेशन होकर के सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका वापस से जो प्लांट्स है उनकी रूट्स इनको एब्जॉर्ब करके यहाँ से ये साइकिल ऐसा चलता रहता है। Excretion and death of animal and plants carries back sulfur to soil. Sulfur can be used by autotrophs again. Some bacteria can convert sulfate into sulfide and some other bacteria can convert sulfide into sulfate. And here we see the H2S gas produced by bacterial action are also converted into sulfide and elemental sulfur. एलिमेंटल सल्फर भी बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा सल्फाइड में कन्वर्ट हो सकता है और एलिमेंट सल्फर को जो बैक्टीरिया हैं वो सल्फेट में कन्वर्ट करते हैं, जिनको ऑटोट्रॉप पुनः यूज़ कर सकते हैं। कुछ सल्फेट बैक्टीरियाज के द्वारा डायरेक्ट एलिमेंटल सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। तो सल्फाइड और सल्फ़र के फॉर्म में आने के बाद जो सल्फ़र है, एलिमेंटल सल्फ़र और सल्फाइड दोनों ही स्टोरेज के फॉर्म में सेडिमेंट्स में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर में और अर्थ क्रस्ट पर मौजूद आयरन सल्फ़र से कंबाइन होकर आयरन सल्फाइड बनाता है। इस फॉर्म में वो सेडिमेंट्स में स्टोर रहते हैं और जब इनका वेदरिंग होता है और फॉसिल फ्यूल
को बर्न किया जाता है, वापस से सल्फर डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर में मिल जाती है और वापस से ये साइकिल पुनः से शुरू हो जाता है। इस प्रकार सल्फर एक से दूसरे बॉडी के द्वारा एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट करता रहता है और ये साइकिल चलता रहता है। The next cycle is phosphorus cycle. Green plant take phosphorus and nitrogen in the form of salts as fertilizer from the soils. This is also the sedimentary type of cycle. Plants required orthophosphates for their nutrition and development. Thus, phosphorus are taken by the plant from the soil. In soil, phosphorus present as phosphate. Plants plant uh, plants are consumed by consumers and both after their death and decay are decomposed by bacteria and fungus, and after that the fungus and bacteria convert their phosphorus to phosphate, and here the cycle are complete. Now uh, storage. फॉस्फेरस रॉक्स में स्टोर रहता है और जब वॉल्केनो एक्टिविटी होती है तो निचली सतह से फॉस्फोरस ऊपरी सतह पर आ जाता है और रॉक्स की वेदरिंग और इरोशन के द्वारा वो मिट्टी में मिल जाता है। जैसे ही सॉइल में आता है, देयर आर टू वेज फॉर द फॉस्फोरस। वन वे इज इन डीप सी। यदि ये फॉस्फोरस डीप सी में चला जाता है तो वो कंप्लीट स्टोरेज में चला जाता है। द अदर वे इज द शैलो सी। तो शैलो सी में जाने के बाद ये पुनः से रॉक्स में चला जाता है और इरोजन के द्वारा सॉइल में मिल जाता है और इस प्रकार से फास्फोरस साइकिल चलता रहता है। So the elements like calcium and phosphorus riches in the deep sea where they are deposited in the form of rocks. In these way they get separated from the cycle. Okay, so this is the phosphorus cycle. The next topic is biodistribution of elements. Biological function of living organism requires approx 27 elements, in which 15 are metal. The metal required in major quantities are potassium, magnesium, sodium and calcium. The minor quantities of manganese, iron, cobalt, copper, zinc and molybdenum. Some elements which are uh, required in very small amount are called trace metal. These are vanadium, chromium, tin, nickel and aluminum. The metals are required to maintain osmotic pressure, balance electrical charge, normal cell activities and so many other activities. The elements required to living organism are found in earth crust, river, sea, water. Different element have different role to different role to play in biological system. Distribution of element in different layer of earth. Here we can divide three layers in which different type of elements are found. The metallic core, it is the innermost layer. Here manganese, iron, cobalt, nickel, copper, silver, platinum, gold are found. The second layer is sulfide layer. Here phosphorus, sulfur, zinc, gallium, antimony, bismuth, mercury and lead are found, and many other elements may be found. The third one is silicate layer. It is the outermost layer, and here chloride, sulfate, carbonates of lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, magnesium, calcium, strontium, barium, etc. are found. And here silicates and oxides of barium, aluminium, silicon, zirconium, hafnium, chromium, molybdenum are found. Certain living organisms accumulate specific elements. These elements are very important for their
biological activities. Some of the examples are iodine in seaweeds, iron in hemoglobin, vanadium in sea cucumber, magnesium in chlorophyll, zinc in eyes of certain animals, magnesium, iron, copper in chloroplast. So we can say that different element plays important role in vital activities, and these elements are found in different surface area, different part, and different localities. These are the biological distribution of elements. Thank you.